Namaste. Welcome to Subhu's Launch Talk. Today I'm going to talk about an Hindi song that gives the essence of how one should look at life. I call it a 3 triple E formula. You'll ask me what is triple E formula? Triple E formula is E for energetic. The second E is for enthusiasm. And the third E is excitement. So in life, if you don't have this 3 E, then it becomes difficult to move forward. Now, from whom can we understand this triple E formula? Can I learn from something? And in this episode, we are going to learn about this 3E triple E formula from a train. The train's journey is captured in a Hindi song, and how the train approaches each and every step is a learning to how one should have the same type of energy, excitement, and enthusiasm like a train. And since Diwali is approaching very closely, just about 3 4 days left, one can connect this to Diwali also. And the festival is meant for regenerating or bringing in the triple E in your life. That is enthusiasm, excitement, and energy. If the Diwali festival is not without energy, without enthusiasm, without excitement, it is like any other day. Having said that, and wishing all of you in advance Happy Diwali, let's learn how to be in this Diwali through this song based on a journey of a train. So first, I will sing this song and then we can go para by para about what is it that we can learn. At the end of the day, Subhu's launch talk gives an idea or gives an impetus to learning. And after you learn, you implement too. Just knowledge is not enough. One tries to implement, but one requires one demo. One requires to see in some example. Keeping that in mind, you can relate to how to get the triple E formula, or how to use this triple E formula, or how this triple E formula can benefit you. So let me start. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है,
सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो रे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पर धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचना बात दिन हो या रात, सिग्नल हुआ तो निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले। यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे कैसी है ने, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को दे कैसी है ने, अच्छा बुरा न देखे। सब है संहार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सुनिए पैगाम ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना। दरिया को पार पर्वत को चीर, रास्ता बना ले अपना। नींदे उड़ा जागो जागा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम न कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को। हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही
है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. So this is a famous song, and what we learn from this song is, look at the train or look at the engine, and look at its excitement to move. Look how it musters its energy to start. Push, push. Basically, this song is based on a mountain train, so which moves like a steam engine. Look at its enthusiasm to move, to do things. So in every paragraph, more or less, these three aspects are highlighted. So I'll go by paragraph so that we can internalize some of its messages. तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. It's saying that look at the train. It is calling you. Just look at the message it is giving. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, and it is saying चलना ही जिंदगी है. Don't stop, keep going. चलती ही जा रही है. We need to keep on moving from one at whatever situation you are in. You have to move to the next situation. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. देखो वो रेल, बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों. It's saying look how enthusiastic we are. Children, when they play, they are very enthusiastic. They are very energetic. They are full of energy. Similarly, देखो वो रेल, बच्चों का खेल, and जवानों सीखो. Means learn from this thing. सर पे है बोझ, there is there is burden on the head. सीने में आग, there is fire in the chest. लब पर धुआं है जानो, and there is smoke coming out from our, which means all sorts of things are happening. I have a huge burden. सर पे है बोझ, सीने में है आग, heart burns, and लब पर धुआं है जानो, that is steam is coming out of my mouth. It is so uncomfortable. इतना मतलब इतना बोझ है कि धुआं आ रहा है मुंह से, फिर भी ये गा रही है. स्टिल इट इज सिंगिंग. नगमे सुना रही है. इट इज सिंगिंग सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. नगमे, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, irrespective of so much of issues. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. So look, so it's talking of the. Then he says, आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली. Look at how things are so difficult for anybody to just get demoralized. But yet, the Gadi doesn't stop. The Gadi keeps up its energy, keeps up its excitement, keeps its enthusiasm. And that is how he describes this situation which is surrounding this Gadi. Aage tufan, there is a storm in front. Piche barsat, there is rains behind. Upar gagan se bijli, there is lightning in the sky. सोचो ना बात दिन हो या रात. It doesn't think whether it is night or day. सिग्नल हुआ तो निकली. If my the moment I get my signal, I move forward. The गाड़ी moves forward. देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है. It is always on the move. It goes up. It's always on the move, irrespective of the circumstances. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले. पीपल आर कमिंग, पीपल आर गेटिंग इन, पीपल आर गोइंग आउट, जस्ट लाइक वाटर. जाने के बाद आते हैं याद. समटाइम्स व्हेन दे मूव, आफ्टर
you you remember that journey. You remember that journey after the days are over. गुजरे हुए वो मेले. After days are over, you remember the time when you faced such situations, when you kept moving and didn't lose heart. kept आगे बढ़ते गए. यादें मिटा रही है, यादें बना रही है. Memories, as you move, it makes memories. यादें बना भी रही है. Some bad memories are erased, some good memories are taken. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. गाड़ी को देख, look at the train. कैसी है नेक. It is got an honesty in its work. अच्छा बुरा ना देखे. Whether it doesn't look at what is bad or this. सब है सवार. Everybody can get into the train. दुश्मन हो ये यार, इधर फ्रेंड और एनिमी, सबको चलिए निकले. एवरीबडी. द ट्रेन कैरीज पीपल टुगेदर, इट टेक्स एवरीवन टुगेदर. जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है. इट शोज अस हाउ टू लिव. इट ऑल्सो शोज अस हाउ टू गिव योर लाइफ फॉर समथिंग गुड. मरना भी सिखा रही है. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. सुनिए पैगाम, ये है संग्राम. It's telling story. You paigam means story. And this is my paigam. This is my story. ये है संग्राम. This is the struggle. जीवन नहीं है सपना. Life is not a dream. दरिया को फाड़. Even if दरिया comes, दरिया means a river. Cross the bridge. Go over the दरिया. Go over that rivers. पर्वत को चीर. Go inside the mountains. The train doesn't get hampered by looking at how to cross the river, how to go through the tunnel. दरिया को, पर्वत को चीर, रास्ता बना ले अपना. फाइंड योर वे आउट. अपना रास्ता बना ले. फाइंड योर वे आउट. नींदें उड़ा रही है, जागा जगा रही है. When you are on the move, as they say that dream is not what doesn't make you sleep. Dream is not what makes you sleep, what you see in sleep. Dream is what that doesn't make you sleep. नींदें उड़ा रही है, जागो जगा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. That is, it's saying that life is not a dream. एक सपना नहीं है. But life is like a journey to cross all the hardships, cross all the struggles, cross the river, go over the bridge, go inside the tunnel, make your own way. And dream is not what you see in sleep. Dream is not what you see in sleep. Dream is that doesn't make you sleep. नींदें उड़ा रही है, जगा जगा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है. चलना ही जिंदगी है. So this song is telling that we are also like a train. If you can understand a train, you can understand your life journey. Like a train, you keep moving. Be enthusiastic. The moment you get and feel that I'm going to, there is an opportunity here. Signal हुआ तो निकली. Come on, take that chance. Take that chance. And always be enthusiastic. Like children who are always enthusiastic. So the bottom of any achievement is enthusiasm. If you don't have enthusiasm, it becomes difficult to even make some effort. So enthusiasm is at the bottom of anything that you
want in life. And Diwali is also a festival which reminds you that life is about the triple E formula. Be energetic, be excited, be enthusiastic, always. Though on that particular day, it is like a SOP. Everybody, the important thing of enjoying a Diwali is be energetic, be enthusiastic, be enjoy the festival. So with that, I come to the end of this video with a tip that triple E formula: energy, enthusiasm, and excitement. Keep it alive in you always. Whenever there may be tufan ahead, there may be a storm ahead, there may be barsat piche, there could be rains behind, there could be lightning gagan pe, but keep your excitement, energy, enthusiasm. ये आग को मत बुझाओ, सीने में आग, ये आग को मत बुझाओ, ये आग को सदैव रहने दो. Just like in Deepavali, it is a string of lights and a lamp of a festive, and you light the lamp. That is, lighting the lamp is removing the darkness. The moment you know the moment you start understanding that energy, enthusiasm is required, there will not be any darkness. It will be a celebration of light. So with that, I wish all of you a very energetic, enthusiastic, and Diwali. And let's always remember this, that the triple E formula, that irrespective of the circumstances, be energetic, be excited, be enthusiastic. Then we enjoy the journey like a train. Thank you very much. If you like this video, like, subscribe, share, give your comments, and don't forget to press the bell icon for more such videos. Till we meet again, goodbye and take care.